आपकी तो फील्डिंग सेट होगी. As you might be knowing, IIM Bangalore has released its exam dates for IIMB UG test for its BSc Honors program. The exam is going to conduct on 13th of December, and you might be wondering how to complete the syllabus and prepare in such a way that you are able to ace the exam, right? So I know you are at the right video. I am Vaibhav Goenka. I have helped over 300 plus students to crack the DBE entrance test, and here I am again with the BSc entrance test preparation video. This Excel sheet will blow your mind, and if you will follow it thoroughly with full dedication, I am pretty much sure you will be able to crack this entrance test. Okay, so let's begin this video. I hope it will be useful for you. Let's begin. Thank you so much. As you are able to see it on my screen, this is the syllabus. Okay, so if you're wondering what's the syllabus, IIM Bangalore will not release its syllabus as it did for Kozhikode. This is the syllabus for all the aptitude entrance test. The syllabus is similar each and every time. So you can see arithmetic में these topics, number system में these topics, modern maths में these topics, geometry में these topics, higher maths में these topics. ठीक है. I've also mentioned कि ये टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है. ठीक है. सो अर्थमेटिक वेरी हाई है ना सारे टॉपिक्स. नंबर सिस्टम में हाई, लाइक यू हैव टू डू इट. वेरी हाई अगेन. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर, मीडियम में you can avoid those topics once, but overall you will need to cover everything. Okay, the only 3 topics cover the lower side, I guess 4. Okay, so 4 topics cover the lower area, and rest of them have a weightage of medium, high, or very high. Okay, so cons becomes really important for the exam because it has only 60 questions. When an exam has just 60 questions and a total of 120 minutes, you will have to expect a lengthy paper. And a lengthy paper means it will be a difficult exam. Okay, there will be no verbal ability questions. There will be just RCs as mentioned. That is, there will be an English comprehension, not VRC. Okay, only RCs, 3 to 4 RCs. ठीक है, it can be 3 or it can be 4. I don't think 3 से कम आएंगी और 4 से ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए. ठीक है. Then we come to LR. ठीक है, LR has, for each topic in LR, it has an equal weightage. Okay, so every topic is of high importance. Okay, now this is my expectation for the exam. Okay, I'm expecting 3 to 4 sets of RCs. Arithmetic में I'm expecting 6 questions. Number system में I'm expecting 2 questions. Algebra में I'm expecting 5 questions. Modern maths में I'm expecting 7 questions. Geometry में I'm expecting 3 questions. हायर मैथ्स में आई एम एक्सपेक्टिंग 2 क्वेश्चंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का 1 से 2 सेट्स आना चाहिए. आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 1 सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस. ठीक है. ऑफ कोर्स दिस कैन वेरी, बट दिस इज माय एक्सपेक्टेशंस एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कुछ ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा और कुछ ऐसी वेटेज में क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. सो लाइक आई हैव बीन द पार्ट ऑफ IIM Bangalore from the past 1 year, and I know what professors want to test on you. ठीक है. So this is an expected pattern based on what they want and what they expect from the new batch. ठीक है. Master plan. Okay, so just copy down this sheet. The link for this sheet is given in the description box. This is the only sheet I can promise will help you crack the BSc entrance test in such a way that you are able to crack the exam. Okay, if you are following this sheet, I can assure you कोई chance नहीं with my selection now. But again, following the sheet comes with a lot of sacrifices. Okay, it's not an easy sheet to follow, but if you're following this, I can assure you admission कैसे नहीं होगा तुम्हारा. ठीक है. 11th of October में just go and give your first mock test. ठीक है. The first mock test of entrance UG is live. है ना. Entrance UG is a IPMAT and CUET prep portal. I am the founder of it. So the first mock is for free. You have to just click here. है ना. Click here and this new screen will open. Click on continue and start your first entrance exam. Okay, it will be like amazing mock test. I am pretty much sure around 7 to 8 students have given this mock test till now. Okay, of course it's a new portal. Just give it. I am pretty much sure you will love this mock test. Plus, what I have taken a feedback from many aspirants who have given this mock test, and what they loved was this detailed analysis. This detailed analysis tells all about you. What's your weakness, what's your strength, where you need to work harder, and how you have to improve. A go-to-go strategy. Okay? Your rank will be listed here. The number of total questions the exam had, 33 correct questions. This person did 33 correct questions. 3 questions were incorrect.
24 questions got unanswered, and the amazing part of this person was 91% accuracy. That was like outstanding. This person completed the exam in 1 hours and 51 minutes and 7 seconds. Or in the section wise, this person scored 24 marks, okay, out of 45. And in the quantitative and data interpretation, this person scored 35 out of 90. English comprehension, like, you will just love this, yeah. The accuracy for every section is given, the time taken for each section is given. Like, all of these things are not available at majority, I will say majority of the mock portals. So just try this mock out, and I am pretty much sure you will love this. Plus, one thing more, we are launching our IIM Bangalore's 10 mock test series. Okay, so the mock test series is out. You have to just click on buy now, and everything will be detailed covered. It will be exact as same as the entrance exam, I can assure you of that. IIM Bangalore BSc mock test 1, mock test 2. Okay, there will be total of 10 mock tests. You're going to just love it. Okay, just buy it. Link is given in the description box. Plus, if you are planning to buy it by Diwali, that is before 20th of October, you can get an extra 10% discount. Okay, so coupon code is Jai Mata Di, and you can start your preparation. Okay. So let's come back to the Excel sheet. In this Excel sheet, I've covered everything that one aspirant needs to crack his or her exam. Okay. First day, first week. Okay? Like, every week is given. Okay? How many weeks are left? There are a total of 10 weeks till your exam is, like, for your exam. Around 9 weeks नहीं मान लो, ठीक है. So first day, like 11th Saturday, just give your first mock test, and understand what is basics of percentage. Practice 10 questions of basics of percentage. Do one DI set and do one RC. Okay, because it will be your first day, I'm not giving you a lot of tasks, but from the second day onwards, you will be filled. You will be having a lot of tasks to cover. Okay, Sunday. Okay, that is Sunday. Cover percentage and profit and loss. You need to cover it. 40 questions you need to practice. DI sets you don't have to do a DI set, but yeah, I will change it to one. Okay, do one DI set and do two RCs. Time, I've left this portion. Why? Because it depends upon person to person. I am pretty much sure these tasks are not for more than 4.5 hours or 5 hours. Like, ये सारे tasks 5 hours में हो सकते हैं. ठीक है. Just study percentage and profit and loss and do its questions. ठीक है. Questions कहाँ से करने? Questions तुम लोग दो तरीके से कर सकते हो. Either go on either buy a book, that is Sarvesh from a Quantum Cat is like a very good book for that exercise problem solving. Otherwise, तुम्हारे पास अरुण शर्मा की बुक है तो वो भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट. और प्लस एक ये एक्सेल शीट है, ठीक है, लाइक द 4th पेज फ्री लेक्चर्स वाली. तो यहाँ पे मान लो तुमको, लेट्स से तुमको आज पढ़ना है परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस. ठीक है, जस्ट गो देयर एंड तुम्हारे पास ये 8 लेक्चर्स है. ठीक है, जस्ट वॉच दीज आउट, है ना. थोड़ा देखो इनको प्रैक्टिस करो, समझो कॉन्सेप्ट में क्या है ना. Of course they will take time because 2 months ही है, पर वही बात है ना, 2 month में किसी को क्रैक करना होगा, वो भी एक IPMAT लेवल जैसे एग्जाम को फॉर IIM बैंगलोर जाना है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. यू कैन नॉट से कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी. और मैंने सब रिसोर्स प्रोवाइड कर रखे हैं यार. मैं तुमको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तुमको यूट्यूब लेक्चर्स प्रोवाइड कर दी कि तुम्हें कौन से लेक्चर्स देखने हैं टू एज द एग्जाम इन द बेस्ट विल मैनर, है ना. तो लग जाओ यार, है ना. ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी. ठीक है, आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में यू विल गेट अपडेट अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द एग्जाम, है ना. कोई भी अपडेट्स आते हैं, वी विल अपडेट यू, है ना. प्लस यू कैन इंटरैक्ट विद योर पीयर्स हु आर आल्सो गिविंग IIM Bangalore BSc एंट्रेंस टेस्ट एंड अदर IPMAT एंड CUET एग्जाम्स. ठीक है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, सो सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं क्वांट्स के, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक. शायद कोई टॉपिक्स मिसिंग हो. अगर जो टॉपिक्स मिसिंग हो, यू कैन सर्च फॉर योर ओन वीडियोस. लाइक दीज आर द बेस्ट वीडियोस which one need to watch to ace the prep, है ना. So then there is this verbal ability guide, है ना, reading comprehension, क्रैक यू का, आई क्वांटा का एंड जजो स्पीकर. ठीक है, जस्ट वॉच दीज वीडियोस एज वेल, इट विल हेल्प यू लॉट, है ना. प्लस हमारे पोर्टल में वी आर प्लानिंग टू होस्ट डेली आरसीज. ठीक है, डेली आरसीज एंड डेली डीआई सेट्स. जो मैं तुमको जहाँ पे दिखा रहा हूँ ना इन द मास्टर प्लान की, ये रोज एक डीआई सेट सॉल्व करना है, 2 डीआई सेट सॉल्व करने हैं. तो मैं आई एम प्लानिंग फ्रॉम 15th of October to give one DI set daily. ठीक है, in the portal. So just sign up there, है ना. जब भी we will be start launching this free DI sets and RCs, we will update you through the email, है ना. So just sign up on entranceug.com. I am pretty much sure you will love the portal. Okay, the best thing about us is the question quality plus this detailed analysis. Like, you also have the
एरिया जहां पे यू कैन जस्ट चेक आउट द करेक्ट क्वेश्चन. इनकरेक्ट क्वेश्चन तुमने कितने करे है ना, व्हाट वाज योर एक्यूरेसी, प्लस दिस इज द बेस्ट पार्ट. ठीक है, जस्ट फिल्टर आउट थिंग्स है ना. फॉर एग्जांपल पहले तो ये सारे सेक्शंस का दिया है. लेट्स से आई जस्ट वांट टू चेक फॉर माय quants. ठीक है, लेट्स गो फॉर quants. सो आई अटेम्प्टेड, ठीक है, सी medium. Okay, this question was medium level. Attempt percentage was 63, 66, correct 66 percentage. Your time itna, and average time was 1 hour 149 seconds. This means that the number of aspirants who attempted this question was 66%. उनमें से 66% के क्वेश्चन सही भी हुए हैं, and they took around 2 minutes, and you took 2 minutes to answer this question, but the average time to solve this question was 1 minute and 49 seconds. ठीक है, so a detail analysis. ठीक है, लाइक अभी तो मैं क्वांट्स का दिखा रहा हूँ, प्लस यू कैन ऑल्सो चेक दिस यार. ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें लग रहा है कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, तो तुमने देखा यार ये नेगेटिव में पैराग्राफ कौन सा है, यू जस्ट स्क्रॉल टू दिस एंड तुमने देखा कि टाइम एंड वर्क का तुमने एक क्वेश्चन गलत किया है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो ऑन दिस यार ना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने देखा कि ये मीडियम क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, कौन सा क्वेश्चन है. ठीक है, यू कैन जस्ट क्लिक हियर. ओके, दिस इज नॉट वर्किंग हियर. हाँ, सो जब तुम्हारी प्रोफाइल खुली होगी है ना, तो तुम उस प्रोफाइल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन अपने आप खुल जाएगा. ठीक है, ये मैंने किसी का रिपोर्ट खोल रखा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, पर डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन भी खुल जाएगा. ठीक है, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर हियर. एंड या देखो स्कोर वाइज रिपोर्ट है, कैन आल्सो गेट इट एज सेक्शन वाइज. ठीक है, सो I know you will love this. Just try and give the first mock test for free. So इस Excel sheet में सब दिया हुआ है. For example, on 23rd of October, you will have to do time, speed, distance and direction sense. Time, speed, distance के 20 questions and direction sense के 20 questions. ठीक है, 1 DI set and 2 RCs. Okay, then you can like evaluate yourself also कि तुमने क्या करा दिन में. Just keep a check on that as well. ठीक है, for example, 29th of October, you will be doing exponents plus syllogism. 30 questions of exponents and 25 questions of syllogism, two DI sets and 2 RCs. ठीक है, because there is no verbal ability, थोड़ा काम इजी हो गया यार है ना. बिकॉज वर्बल एबिलिटी नहीं है तो वर्बल एबिलिटी की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन आरसीज है ना. तो जितनी ज्यादा आरसी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्स में उतना ही बेहतर हो रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1st of November, give your mock test है ना. give a mock test and practice 20 questions of quadratic equation. Week 5, give the mock test 20-50 questions of quadratic equation. ठीक है, and 4th of December को I have planned this integration and differentiation. तो integration differentiation थोड़ा पढ़ लेना, कहो 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं है ना. so like कोई चीज का मना नहीं है, because it's an aptitude test, कुछ भी आ सकता है. ओके, बाकी 11-12 को just relax and हो जाएगा. just don't need to worry of the exam है ना. इस शीट को फॉलो करो, कैसे नहीं निकलेगा. ठीक है, मैं आई कैन प्रॉमिस यू दैट अगर तुम कोई ये शीट ढंग से फॉलो कर रहे हैं, दिन में 5 घंटे पढ़ रहा है, आई एम अश्योरिंग कि एग्जाम क्रैक होगा. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. गो एंड गिव योर फर्स्ट मॉक टेस्ट फॉर फ्री एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. लेट्स मीट सून. थैंक यू सो मच. टेक केयर. थैंक यू. बाय.